Welcome to all in accountancy classes. Dear student, please subscribe the channel for further notification. Today's topic is all forfeited shares are not reissue. आज आप हमसे पढ़ेंगे जितने भी शेयर फोरफिटेड हुए हैं सबको हम इशू नहीं करेंगे। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कांट बी मोर देन अमाउंट रिसीव ऑन द शेयर दैट आर इशू। जब हम फोरफिटेड शेयर को री इशू करेंगे तो उसमें जो डिस्काउंट की अमाउंट होगी विच इज नॉट मोर देन दैट अमाउंट वी हैव रिसीव फॉर इशू ऑफ शेयर। जिस शेयर को हम इशू करने जा रहे हैं, जिस शेयर को हम इशू करने जा रहे हैं उसका जो अमाउंट है उससे अधिक डिस्काउंट का अमाउंट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 1000 शेयर फोरफिट किए हैं और उसमें हमको अमाउंट रिसीव हुआ है ₹5000। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं, 1000 शेयर को फोरफिट करने पर अमाउंट कितना रिसीव हुआ है? 5000। अब हम आउट ऑफ 1000 में सिर्फ 500 को रीइशू करेंगे। आउट ऑफ 1000 में कितने को रीइशू करेंगे? 500 को। तो 500 को जब हम रीइशू करेंगे तो डिस्काउंट का अमाउंट 2500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम 1000 को रीइशू करते तो 5000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर हम कितना को कर रहे हैं? 500 को कर रहे हैं, 50%। तो 5000 का 50% कितना होता है? 2500। दैट मीन्स डिस्काउंट की अमाउंट 500 शेयर को जब हम रीइशू करेंगे तो 2500 से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें यहां पर कि 2500 के जगह पर डिस्काउंट की अमाउंट अगर कितनी हो? 1500 हो। डिस्काउंट की अमाउंट कितनी हो? 1500 हो। तो हम लोग 2500 माइनस 1500 इक्वल्स टू 1000। तो ये जो हमारा 1000 अमाउंट है इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां? कैपिटल रिजर्व में। तो आउट ऑफ 1000 शेयर में हमने सिर्फ 500 शेयर को इशू किया। अभी भी हमारे पास 500 शेयर फोरफिटेड शेयर है और इस शेयर को हम तब तक, इसके जो अमाउंट है फोरफिटेड शेयर अकाउंट को तब तक रखेंगे जब तक कि हम इसको इशू न कर दें। जो रेस्ट हमारे पास 500 शेयर है उसको हम फोरफिटेड अकाउंट में तब तक रखेंगे जब तक कि हम जो 500 हमारा रेस्ट बचा हुआ है उसको हम फिर से रीइशू न कर दें। और अगर हम इस शेयर को रीइशू नहीं कर पाते हैं तो इसका जो अमाउंट है उसको हम ऐड कर देंगे पेड अप कैपिटल में, अंडर सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर में। और ये जो गेन है हमारा, जिसको हमने 1000 के बारे में आपसे कहा कि अगर डिस्काउंट की अमाउंट 1500 है तो 2500 माइनस 1500 दैट मीन्स जो 1000 है उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो ये अगर अमाउंट आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला है
total amount forfeited. Total amount forfeited, that means what? 5,000 by number of share forfeited 1,000 multiply number of share reissue 500. So the result is what? 2,500. Result is what? 2,500 minus reissue discount. I have assumed reissue discount is what? 1,500. So 2,500 minus 1,500 equal to 1,000. So amount 1,000 is transferred to capital reserve account. An example. A Limited forfeited 600 equity share of rupees 10 each, issued at a premium of 20%. Number of share forfeited 600. Face value rupees 10. Premium 20%. That means 20% of 10 is equal to rupees 2. So premium amount is rupees 2. Ram, who had applied for 720 equity share, applied for 720 equity shares. For non-payment of allotment money of rupees 5 per share including premium, he is unable to payment in allotment. Rate is rupees 5 per share including premium. Premium amount is rupees 2, so the allotment amount is rupees 3. And the first and final call of rupees 5 per share. Also, he is unable to payment in first and final call. Rate is rupees 5 per share. Out of these, that means here 600 shares were forfeited. Out of 600, 200 equity share were reissued to Shyam, credited as fully paid for rupees 9 per equity share. Out of 600, only 200 shares are reissued at the rate of rupees 9 per share. Company was to retain excess application money to against call, pass journal entry to record forfeited and reissue of share. Here is working note. Working note for what? Only this time I will show amount of forfeited. So first is allotment. Here is not given in this question the rate of application. How do you calculate? Only given is allotment rupees 5, first and final call is rupees 5. 5 plus 5, 10. Here is face value 10, premium is 10, then market value is rupees 12. 12 minus 10 equal to 2. So, rupees 2 per share application. In this question, there is not clear about the rate of application. Then how do you calculate? Very simple. 5 plus 5, 10. Market value is what? Face value is 10, premium is rupees 2, then total is 12. 12 minus 10 equal to rupees 2. So rupees 2 per share, this is the rate of application. Now, in this question, 600 shares were forfeited due to non-payment of allotment and first and final call. First allotment, 5 rupees 2 is what? Premium. So 5 minus 2, 3. 3 is the rate of allotment. Rupees 3 is the rate of allotment.
600 share were forfeited. So 1800 rupees 2 is the rate of premium, 600, 1200, 3000 unable to payment on allotment. But he has also applied 720 share. That means he paid excess application money. He has also paid excess application money. So here is rate of application is 2. Rate of application is rupees 2. And applied 720, he has enabled to payment of 600 shares. So difference number of share is 120. 120 is multiplied with 2. That means it will be rupees 240. That means he has paid excess application money is rupees 240. So we subtract 240, that means 2760. So the shareholder is unable to payment of on allotment is 2760. Also, he is unable to payment in first and final call. The rate is 5 and number of share forfeited is 600. So there is 3000 amount unable to payment on first and final call. Here is only 3 installment: application, allotment, first and final call. Shareholder, the name is Ram. Ram has been non-payment in allotment and first call. That means he has also paid in application. How much amount? We mention on the share forfeiture. The rate of application is 2 and he has applied number of share is 720. That means on the application he has given 1440. So that amount is forfeited by the company. Also, here in this question, reissue of only 200 share. Number of share forfeited is 600. Out of 600, only 200 shares are reissued. So here calculation of gain on 200 share. Gain on 200 share. Formula: total amount forfeited by number of share forfeited into number of share reissue. Total forfeited amount is 1440 and total number of share forfeited is 600 and number of share reissue is 200. Then rupees 480 is the gain on how many shares? 200 shares. Journal for share forfeiture. Journal is bank account debit. In this question, company has not received the प्रीमियम अमाउंट. जब कंपनी प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं करती है और शेयर फॉरफिट हो जाता है, देन वी विल शो हियर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. नॉट रिसीव, प्रीमियम नॉट रिसीव. हियर द सिचुएशन इज प्रीमियम नॉट रिसीव. जब प्रीमियम कंपनी रिसीव नहीं करती है एंड शेयर बिकम फॉरफिटेड, इन दिस केसेस we will mention here security premium reserve account. Bank account debit to security premium reserve account, to equity share allotment, non-payment, to equity share first and final call, non-payment, to share forfeiture account.
here is mention number of share forfeited is 600 and paid up is application, allotment and first call also. क्वेश्चन में साफ लिखा है कि राम हैज अनेबल टू पेमेंट इन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब कंपनी के द्वारा यहां तक कॉल किया गया. सो टोटल पेड अप वैल्यू इज ₹10. सो 600 into 10 becomes 6000. सिक्योरिटी प्रीमियम, नंबर ऑफ शेयर forfeited 600 और रेट ऑफ प्रीमियम इज ₹2, सो इट विल बी 1200. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट में राम ने कितना नहीं पेमेंट किया, 2760. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3000 and share forfeit amount is 1440. Here is share forfeit account is 1440. This is the money that what company has already received. तो कंपनी जो ऑलरेडी रिसीव करती है जब शेयर का फोरफिट कर दिया जाता है तो ये जो अमाउंट है वो कंपनी का हो जाता है. नरेशन, शेयर फोरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल. नेक्स्ट जर्नल 4 रीइश्यू ऑफ शेयर. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. Out of 600 we will only reissue 200 or rate is ₹9, so we receive 1800 and equity share capital value is 200 and ₹10 is paid up amount is ₹10 per share, so 2000 minus 1800 it's become 200. So this is the share forfeiture account, that means discount allowed by the company. Now out of 200 share profit is 480. So out of 480 when I reissue 200 share there is loss, or you will say discount is 200, then rest is ₹280. So ₹280 is the gain on 200 share, reissue on 200 share. So this is transferred to capital reserve account. So journal for that, share forfeiture account debit, share forfeiture account debit to capital reserve account, 280. Profit transferred to capital reserve account. Thank you.